Hello guys, is my screen visible to everyone? Hello guys, is my screen visible to everyone? Okay, so I hope my screen is visible and I am completely audible to all of you. So let's get started. So I will teach you in English Hindi mix. Okay, so it will be good for me also and for you all also. So hashing is a technique. It is a data structure. It is used it is used to efficiently store and retrieve data. So we know, so it is, I मैं ये बोल सकता हूँ कि it is a searching technique. Okay, so we know about the linear search. We know about the binary search. If we have to find any number in an array, or so in linear search gives you time complexity of big of n. In binary search, you can expect time complexity big of log n.
big of log n you can expect. But using hashing technique to search any element, you can search any element in big of 1 time complexity. Getting my point? Okay. Only give me 1 minute. I think it is clear. Now, it hashing involve means how you hashing involve mapping data. You can map data at specific index means it is key value pair. You know dictionary in Python, key and value. So what is the key? Key may be any index and value will be function of that index. Fine. Let's say एक एरे ले लेते हैं. You have to 1 to 15. No, let's say you have numbers, you have data from 1 to 15 or 1 to n. So if we can take one function y equal to f of x for any x, your value for any key x. So अगर मैंने दे दिया कि let's say your f of x will be equal to x. Let's say we are analyzing first function f of x equal to x. So for x equal to 1, f of x will be 1. For x equal to 2, f of x will be equal to 2. समझ रहे हो? x की वैल्यू अगर 3 है, f of x की वैल्यू equal to 3. Like this. So this graph will be your like this. Correct. So अगर आपका f of x is a function, if x takes value from 1 to n or 1 to 15, then array भी कितना होगा? 15 साइज का होगा. Is this thing gets clear to you? So if you have to insert a value 3, means if you have to अगर if you start 15 to find 3, you have to iterate through 3. So means at third index you will get the value 3. At 15 index you will get the value 15. So if you have to find the value 50, then can you create, is it feasible to create an array of 50 size? If you have to find the array including 1000 number, is it feasible to take array of 1000? So accordingly, we know that this function is not suitable here. To find f of x for x equal to 10k, it is not feasible to create an array of 10k and to find, if you have to find the 5.5k and you can take 5.5k index. No, obviously not. But अगर आपको character, you know, the character is only 26. So you can take means A की ASCII value, B की ASCII value दे सकते हैं, or you can take character A as 1, character B as 2. So you can create an array
of size 26. You don't require hashing. Are you getting? ये तो क्लियर हो गया नाउ। अब क्या बोलते हो 10K वगैरह इस तरह के नंबर्स हैं आपके पास। सपोज 7.5K है और यू हैव 550, you have to search element x equal to 550 in an array। आप क्या करोगे अगर आपका एरे 1 to 1000 तक के, तो क्या आप 550 वाले इंडेक्स पर जाओगे? और मींस इज इट गुड, इज इट गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 1000? सो हियर आप क्या करोगे, फंक्शन को चेंज कर दोगे। एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स मॉड 10। तो क्या होगा, टू स्टोर 9,999 element, you required only how much space? 99? Clear, no? So you are shortening the function on this principle only, not mod. Not exactly the mod, but on this principle only your hashing will work. Okay. Some shots to explain you better. Okay. So मेरे पास 10 साइज का एरे है। इफ यू हैव एरे ऑफ साइज 10, आपने क्या क्रिएट किया हियर, हैश टेबल, हैश मैप ऑफ साइज 10। ओके, सो एरे साइज इज 10, बट आपके पास डेटा है लाइक 8, 3, 13, 6, 4, 10। दिस इज द डेटा। नाउ यू हैव टू insert this data into the hash map. How will you insert this data into the hash map? अब आपको तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये वाला तो अपन ने सॉल्व कर लिया कि डायरेक्टली आप इंसर्ट कर दोगे हैश मैप के अंदर। अगर x इक्वल टू 5 इंसर्ट करना है तो फिफ्थ पोजीशन पे 5 इंसर्ट कर दोगे, लाइक दिस। ठीक है, इतना तो मैथमेटिक्स क्लियर है सभी को? ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई हैवंट टेक द नेम ऑफ गॉड। God is always there to help you out. So with the name of God,
आई कैन अगेन रिस्टार्ट, ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। नाउ यू आर टेकिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड साइज, लेट्स से योर साइज इज 10। तो अब अगर 8 को आपको, तो आपका हैश टेबल और हैश मैप, आई कैन से हैश टेबल कितने साइज का हुआ, 10, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। नाउ यू हैव टू इंसर्ट 8। तो आप किस तरह से इंसर्ट करोगे, 8 मोर 10 कहाँ जाके बैठेगा, यहाँ, यहाँ आ जाएगा आपका 8। देन टू इंसर्ट 3, वेयर विल यू इंसर्ट 3, एट थर्ड पोजिशन ओनली, थर्ड पोजिशन पे इंसर्ट करो ना, करोगे ना। सो 8 at 8 position, this is 9, this is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। 3 कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ। नाउ 13, 13 मोर 10 कितना हुआ, it is 3 again. Now if you insert 3 here, again to insert 13, यहाँ क्या हो गया, कोडिजन, कोडिजन हो गया ना। How will you insert 13 here? This is the difficulty that you are facing, क्योंकि आपका 3 भी यहाँ आकर बैठ रहा है, 13 भी यहाँ आकर बैठ रहा है। So to handle collision there are some techniques. आप क्या करोगे, 13 पहले इस पोजीशन पर 3 को बैठा दिया, देन लिंक लिस्ट में 13 को बैठा दोगे, देन 6, 6 तो यही बैठेगा, 4 यही बैठेगा, 10 एट 0 पोजीशन बैठेगा, क्लियर है। सो दिस इज द वन वे टू हैंडल द collision. This method is called collision chaining. Collision chaining. ठीक है। Fine. Now there are some other methods to handle the collision. So let's have a look at here. ये तो हुआ h of x equal to x के लिए। Then these are the methods to resolve collision. Open hashing, chaining, close hashing में linear probing and quadratic probing. Okay. Now, how chaining, how collinear probing and how quadratic probing will work, देख लेते हैं फट करना। Okay, so now your chaining is will work. So what is your function h, or I can say f of x equal to x mod sin। तो आपने ये डेटा तो डालना है आपको। तो मैंने कहा कि 3 को मैंने यहाँ एक लिंक लिस्ट बना के पुट, जब 13 आया तब मैंने अगेन 13 वाली एक नई लिस्ट बना के पुट किया। सो 3
the address of next node. करेक्ट. 6 पर क्या जाएगा? 6. देन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड 8. एड्रेस. फाइन. क्लियर. दिस इज द मेथड ऑफ चेनिंग. हर एक चीज अपनी अपनी जगह पर चलेगी. Sorry for a bad diagram. Okay. Now next method is your type of open or close. So next method is your linear probing. ये क्या है? अगेन सेम डेटा ले लेते हैं. 8 3 13 क्या था? 6 या 5 4 10. तो यहाँ अगेन वी आर क्रिएटिंग द हैश मैप ऑफ सेम साइज. सॉरी, हैश टेबल ऑफ सेम साइज 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In any test, no one will ask you this, but in interview, you you should be in position to explain this concept to interviewer. अब आपने क्या दिया था चेनिंग में? f of x इक्वल टू एक्स मॉड सन. लीनियर प्रोबिंग कहता है कि अगर अपन ने 3 यहाँ इंसर्ट कर दिया, सो नेक्स्ट व्हेन यू एनकाउंटर 13, आप इसके यहाँ इंसर्ट न करते हुए नेक्स्ट ओपन पोजीशन टू दिस यहाँ इंसर्ट कीजिए. मीन्स 13 यहाँ इंसर्ट कीजिए. क्लियर है? तो ये यहाँ इंसर्ट करने के लिए ऑब्वियसली कोई जादू तो नहीं है, मैजिक तो नहीं है. यू हैव टू मेक सम फॉर्मूला. सो व्हाट इज दैट? नाउ अब आपका ये जो एफ ऑफ एक्स चेंजिंग के लिए था, ये यहाँ हो जाएगा चेंज. सो इट इज एफ डैश एक्स. सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस कुछ ले लेते हैं कांस्टेंट. सपोज अब यहाँ तो अपने पास इंडेक्स के अलावा कुछ है ही नहीं. सो एफ ऑफ आई मॉड सन. इतना क्लियर है आपको? Now, what next? अब अगर f of I क्या हो सकता है? It is any I. It may any I. I will be from 0, 1, 2 till any. ठीक है. सुनो, अब आपको 8 इंसर्ट करना है भाई. 8 के वक्त क्या लेंगे अपन? f of I 0 ले लेते हैं. f of 0 is 0 भैया. ठीक है. 8 तो यही इंसर्ट हो गया. देन 3 कहाँ इंसर्ट होगा? ये आई ऑलवेज स्टार्ट विद 0, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन पे कहा ना मैंने आपको. ठीक है. सो फॉर 3 एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 0. पहले ये 0 3. सो ये यहाँ पहुंच गया 13 के वक्त एफ ऑफ 13 प्लस एफ ऑफ 0. f of 13 is again 3. Sorry, so it is 13 plus 0 mod 10. So it is 3. बट यहाँ तो है, तो आपको नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है. तो यहाँ f ऑफ 0 की जगह आप क्या करोगे? इंक्रीमेंट करोगे 1 से. सो यू कैन ऐड f ऑफ 13 प्लस f ऑफ 1 mod 10.
सो आपका 13 बैठेगा इस पोजीशन पर, ठीक है। 6 तो भैया यहीं बैठ गया। 4 कहाँ बैठेगा? बैठना तो यहाँ चाहिए, बट यहाँ बैठेगा क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 1 लेगा उधर। 10 कहाँ बैठेगा? यहाँ। दिस इज द concept of linear probing। देख लो एक बार, then we move ahead। Your next concept will be in this only how to handle codaging chaining देख लिया, linear probing देख लिया। Next is your quadratic probing। Now how quadratic probing work? सेम रहेगा, सेम डेटा है आपके पास, ये है सेम डेटा 8 3 13 लेट्स से 23 43 10, ठीक है। हैश टेबल 4 5 6 7 8 9, यहाँ एफ डैश एक्स न्यू बन जाएगा विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ आई मॉड साइज, ये तो फिक्स है। नाउ हियर एफ ऑफ आई विल नॉट बी आई हियर, सो आई इफ 0 1 2 3 तो आपको आई स्क्वायर पता है। सो लेट से 8 का तो आप मैप कर दोगे 8 को इधर, 3 को भी इधर। फॉर 13 हाउ विल यू कैलकुलेट 13? 13 यहाँ आ जाएगा, देख लो ना। 0 के लिए तो यही आएगा 13, बट फॉर 1 1 का स्क्वायर 1, सो 13 प्लस 1 14, सो 14 मॉड ऑफ 10 4, सो यहाँ बैठ जाएगा। 23 के लिए किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे बताइए मुझे। f dash 23 will be f of 23 plus f of 0 mod 10, so 23 plus 0 is अब I equal to 1 हो गया, it is again 3 plus 1 mod 10, so it is 4 मिट गया तो 23 कहाँ बैठेगा? सो आई कैन टेक इट लाइक, so 2 का स्क्वायर 4, सो 7th पोजीशन पे 23 बैठ गया, करेक्ट है। वर्क, ठीक है। दिस इज द टेक्निक्स ऑफ हैशिंग। देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। I can move ahead with the questions now।
Wait for 1 minute. Okay. So sharing the screen again. Am I audible now? If I am audible, am I audible? Okay. Okay. So now this is the first question that we are going to solve right away. Okay. So this is the question. You have to check if there are any two equal numbers in an array at a distance less than or equal to k. I hope this is screen is visible to everyone. Okay, yeah, it is buffering in between because it is lagging on my end only. So, so you have to check if there are any two equal numbers in an array at a distance. How will you check this? बताइए. At a distance less than or equal to k. Now, just try. आपके पास कोई भी दो नंबर है, so equal number you have to check at a distance less than or equal to k. So k distance पर मतलब let's say you have one array, उसके k distance पर आपके पास कोई k distance पर इक्वल एलिमेंट है या नहीं, ये आपको चेक करना है.
brute force, you can use two for loops and check if distance between any two element is less than or equal to k. This is simple brute force approach that you can perform. What next? किस तरह से करोगे? Let's say you have one array. Is there any link here for the question? No, I think. Okay. I need only test case. Let's say you have array 5, 10, 11, 12, 7, 8, 11. Let's say k value is 5. So यहाँ आउटपुट क्या आएगा? Yes. So using hash map, brute force तो क्लियर है. Using hash map आप क्या करोगे? What is the key here? You may take key as a index. Index दे सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. करेक्ट. सो अगर सेकेंड नंबर पर आपका 11 आ रहा है एंड आप 11 के अगेंस्ट 2 यहाँ रख रहे हो, 5 के अगेंस्ट मैप में 0 डाल रहे हो, 10 के अगेंस्ट 1 डाल रहे हो, सो 12 के अगेंस्ट आप क्या करोगे? 3 डाल दो. 7 के अगेंस्ट 4 डाल दो. 8 के अगेंस्ट 5 डाल दो. अगेन 11 आया तो आप क्या कर सकते हो? 11 माइनस 11 के अगेंस्ट क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 2. एंड 11 का इंडेक्स क्या है? 6. 6 माइनस 2 इज 4. इज इट लेस देन 5? सो ये कंडीशन आपको एवरी एलिमेंट के अक्रॉस चेक करनी होगी. दिस इज बेसिक ड्रायर आंसर मैंने पता किया. ओके ना? Yes or no? Okay. So this is the logic that for every element we need to check only the last occurrence or last index where this element has occurred before. Correct. We can use a hash map which tells us the last occurrence where this element has occurred. We just need to calculate the distance between current occurrence and last occurrence, जैसे अपन ने यहाँ फाइंड आउट किया. ठीक है. And if distance is less than equal to k, this is the question. You have to return here true, else you have to return false. Clear? So code links are given to you here. मैं बता देता हूँ.